Okay, so we are live. So, hello everybody, good morning, and welcome back to our live webinar, which we conduct every Sunday. And thank you everybody for joining in. And we are here today with Miss Priya, and today we are going to talk about something very, very important and something which is very much relatable to us about boundaries. Like every time we talk that we need to create boundaries and boundaries are important for us, but at the same time we do feel guilty about it. We feel that we are doing something wrong, that is, we should not say this, or even knowing that what is right, we sometimes we do not go forward with that. So today we are going to understand the psychology behind it, and also how we can affirm with our boundaries and how we can make it more intact. So we'll take little bit of we'll take 1 or 2 more minutes so that everybody has joined in, and after that we will start. But thank you, Priya ma'am, for joining us here and for deciding this very, very important topic. So give us 2 minutes and then we will be starting. Sure, no worries. Thank you, Aparajita, and also AHA Therapy for giving me this opportunity. And also to the audience, a very happy new year. Yes. Happy New Year, Yes, we'll wait everybody. for a while. Yes. Okay, I think we shall start. Yeah, Okay. 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 So before we go ahead, I would like to formally introduce Miss Priya ma'am. So Priya Jayesh Darji is a clinical psychologist with a master's degree in in clinical psychology. She has worked at Tata Memorial Hospital, supporting individuals with tobacco addiction through evidence-based therapies such as CBT, DBT, and behavioral intervention. She has also served as a psychology teacher for senior school and has experience working with neurodivergent children using play and group-based therapies. Currently, she works under a consultant psychiatrist offering integrative evidence-based counseling for concerns including anxiety, depression, OCD, emotional regulation, personality related challenges, and self-esteem issues. Alongside clinical work, she has actively conducted mental health awareness programs and corporate well-being workshops focusing on resilience, stress management, and emotional well-being. Welcome, ma'am, to our for our webinar for today, and thank you so much for being here. And we are so grateful, and we are very excited to hear your presentation. So I'll hand over to you. So over to you, ma'am. sure. Thank you, Aparajita, for introducing me and giving me a warm welcome. So, yes, as you have introduced me already, I would like to continue the session first. Can you tell me, Aparajita, that Mhm. have you ever said no and felt guilty? I know we are psychologists and people have this myth that we shouldn't, Mhm. feel that, we shouldn't feel that those things which human beings feel. So, have Mhm. you ever said no, or have you set it a boundary, but then immediately a guilt, came in your mind and then you changed your decision or something like that? Yes, I think it happens a lot. And when we are talking about being as a psychologist, it happened in that professional thing also. Like, sometime when client try to have a session immediately, and I'm like, no, I cannot have the session. You need to book it prior. But at the same time, the thought goes behind, what if, if they are in a situation where they need to talk to, and sometimes I do make adjustment to my own routine, and then I feel guilty about that. I shouldn't have done that or said no, or may have just stick with my boundary.
So yes, it has Right, happened. right. In our professional lives and also in our personal lives, there must be so many incidents where we get into guilt of deciding things for our family or decide doing things for someone else, and then we go into guilt that why did I do this? I mean, should I have done this? Or we start questioning ourselves. So, why do we feel like this? I mean, what is the basic reason or what is the reason behind this? Can we think of that? Mm, So, yeah, I but think yes. So sorry. no, Yeah, no, go go ahead. ahead. Yeah, no, no, go ahead. Yeah. It's all right. So I was thinking the reason maybe because we are conditioned somewhere that हमें तो हाँ ही बोलना है या हमें सबकी मदद करनी चाहिए. They will feel bad if I say no. So true, so true. And when we try to break that pattern of us, so we go into guilt, right? So, but yeah, feeling guilty is very normal. uh, we all feel guilty. We all feel guilt in our brain, in somewhere in our brain, and then we start questioning our daily patterns, start questioning our decisions and everything. So it's very common and it's very normal. So if you feel guilty, that's okay. You don't have to, change your decisions or change or anything. You don't need to carry that feeling of guilt all the time. It's all right. It happens to everyone, not only to age where people are counted as, responsible, but it happens to children also, to mid-age also, to youngsters, and to also uh, old age people also. So it happens to everyone. Yeah. Now let's talk about boundaries. Yeah, so first of all, boundaries usually are meant for what? Can we think of not from the psychological point of view, but from a general point of view? What are boundaries actually? When I think about that, it's like, the boundary which we create around our house, and I'm able to think of that. So for Indian population, most common boundary is cricket के जो boundaries होते हैं, that Yes. ball has crossed the boundary. So if it is touching the line, then it is four, and if it is crossing without touching the line, then it is six, right? So people in commonly it is for man. We can say that for them boundary is basic, that I mean we can say that cricket ke boundary is only the boundary that we all know, right, for Indian population. But in psychological view, boundary is nothing but creating limitations. And yes, Aparajita, even what you said is completely correct. Boundary in our near our house or near our family or everywhere is also very much important. The limitations are very much important, but here boundaries, when we are speaking of it, is about emotional and psychological limits to protect our energy, right? uh, when we say कि हम काम पे जा रहे हैं और काम पे जा रहे हैं and people are giving us extra काम. लोगों को corporates में कितना काम मिलता है, and there are so many people who cannot say no, right? So even in our work culture also, मतलब we know that people need psychology, people need counseling. तो हम हमारी बाउंड्री सेट करके रखते हैं, बट बिकॉज हमें पता है कि ये इंसान को जरूरत है काउंसलिंग की, वी ऑलवेज एक्सटेंड इट और वी ऑलवेज क्रॉस लेट इट क्रॉस, राइट? कि ठीक है, चलो कोई बात नहीं, दिस पर्सन नीड्स इट, सो लेट्स जस्ट take it one more session, even when we know that we are full with clients and we are full with our slots, we somewhere adjust it, right? So it happens with everyone, but here boundaries are emotional and psychological limits. When a person feels very much emotionally drained, yeah, emotionally tired, yeah, mentally tired. So this
protects your energy, protects your time, gives you mental peace at the same time. And don't you think so that a lot of times when you create boundaries, तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि अरे मैंने बाउंड्री क्रिएट कर दी, what this person might think, what this person would do, or something like that, right? हम we always think it's in our nature, it's in everyone's nature. So we need to know here that boundaries are not a punishment, right? We all feel that it's a punishment, but it is not a punishment and it's a protection. It is protection for your own mental peace and your energy at the same time, right? You want to say something, Aparajita? Yeah, this is very true. Like when you said that, it's not punishment, but it does feel like punishment. It feels like that I'm doing something wrong, or I'm being so assertive, or I'm being negative by saying no. But this is very true that it's not a punishment. This is something to protect my energy so that I can cater to that person need in a more efficient way. So it's very important to Right, learn this, that it's not a punishment. right. Are you saying something? Hello? Yeah. So, Yeah, I yes, can hear you. um, yeah, okay. So, yeah, in India, when we keep boundaries, तो हम हमेशा यही सोचते कि अगला पर्सन क्या बोलेगा, अगला पर्सन क्या करेगा, right? Am I audible or am I stuck somewhere? No, no, you're audible. I am, right? Okay. So हाँ. इंडिया में लोगों को अगर हमारे एज के पीपल या फिर someone other than this also, if they don't want to go to a family functions are so important for Indian people, you all know, right? So अगर किसी को नहीं जाना है, the very first thing that people think is, most of our parents, okay, most of our parents always think कि अगर हम नहीं गए तो हमारे शादी में कौन आएगा, हमारे फंक्शंस में कौन आएगा, है ना? तो somewhere we always think of the future and then we don't say no even when we are tired, right? So ये भी होता है, यहाँ पे भी ऐसा ही फील होता है कि नहीं, जरूरत नहीं है. So what is this? This is basically nothing but your inner conflict, right? अब inner conflict यानी कि क्या? Inner conflict यानी कि जब भी हम सोचते हैं कि मैं ना बोल दूंगी या मैं हाँ बोल दूंगी या जो भी मुझे नहीं करना तो आई विल डू इट, आई विल से नो. सो हमारा हमारे अंदर जो हमारा ब्रेन है, they start thinking, they start into two parts, they divide into two parts. One part wants self respect, the other one wants approval and connection with the people who they are setting boundaries with, right? तो एक पार्ट बोलेगा टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, देन द अदर पार्ट विल से कि व्हाट विल पीपल थिंक, अगर मैं नहीं गई तो क्या बोलेंगे, अगर मैंने ये नहीं किया तो क्या होगा, राइट? सो द कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट्स क्रिएटिंग इन योर ब्रेन. और जब ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है तो आपका ब्रेन इजीली गिल्ट डेवलप कर देता है. अब गिल्ट स्टार्ट होता है बिकॉज ये जो ब्रेन है वो फाइट करता है हमारे एक साथ. So you want to say no, but you worry about the other things that are tagged along with it, right? So this happens with everyone. मेरे साथ भी होता है when I set a limit to something, but again, if it is very close to me, then I don't want to set a limit because I want to also get approval or connection with the person, right? So this happens with everyone. The inner conflict within us goes constantly with everyone. ठीक है? We have to understand that where is it is coming from.
where it is coming from. And this is the basic and the base of understanding this. Knowing where it is coming from is very much important. So it's coming from somewhere childhood, और इस childhood में आपका conditioning वैसा हुआ है. Most of us have been taught कि you should be adjusting, you should not disrespect other people, you should never say no, and you should not never back answer. We all have been conditioned in this way only. मतलब हमारे अंदर ये इतना बोल बोल के इतना इनग्रीन मतलब इतना डाल दिया होता है. इट इज लाइक अ डिफॉल्ट सिस्टम इन अस. तो हमारा ब्रेन एक तरीके से पैटर्न क्रिएट कर देता है, क्योंकि हम बचपन से ये सीखते आए हैं, बचपन से ये करते आए हैं. तो हमारा ब्रेन एक तरीके से पैटर्न क्रिएट कर देता है. और लेट्स से ये पैटर्न 15 साल तक चलता आया, 10 साल तक चलता आया, एंड देन वी आर अंडरस्टैंडिंग कि ये पैटर्न तो मुझे कहीं ना कहीं ड्रेन कर रहा है, ये पैटर्न तो कहीं ना कहीं मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, कहीं ना कहीं मुझे बहुत ही तकलीफ दे रहा है. राइट. सो जब हम ये समझना चालू करते हैं तो हम कहीं ना कहीं बाउंड्री सेट करना चालू करते हैं. अब जब हम ये बाउंड्री सेट करते हैं तो योर ब्रेन स्टार्ट्स समवेयर, योर ब्रेन स्टार्ट्स टू उस चीज को ब्लॉक करना स्टार्ट करते हैं कि ये तो मैंने कभी नहीं किया, अरे ये क्या हो रहा है, दिस इज समथिंग न्यू फॉर मी. Okay, so your brain starts to block it and it does not want to change the pattern. ठीक है. तो उस पैटर्न को जब हम ब्लॉक करना स्टार्ट करते हैं, ब्रेन ब्रेन जब ब्लॉक करना स्टार्ट करता है, तब गिल्ट ज्यादा से ज्यादा होना चालू होता है. इट माइट लीड यू टू crying, it might lead you to changing your decisions all the time, prioritizing everyone. ठीक है. सो इट इज मोस्टली चाइल्डहुड कंडीशनिंग. ठीक है. Another thing which is there is fear of disappointing others. Now when we say, हम जब काम करने पे आते हैं, when we go to work, corporates में बोलो या फिर even on educational system में भी बोलो या फिर कहीं पे भी जाओ, आप कहीं पे भी काम कर रहे हो, the immediate respond is that हाँ मैं कर लूंगी, या फिर हाँ मैं it's okay, I can do this, I can do this, you can give me as much as work you want to give. Now why do we take so much work? Very first thing is disappointing is something that should not be done, is what is taught to us. और जब ये सिखाया गया होता है तो हम डिसअपॉइंट करने के लिए भी हमें डर लगता है कि सामने वाला इंसान अगर डिसअपॉइंट हो गया तो क्या. राइट. फिर आता है रिजेक्शन. हमें यही हम वी आर सो मच I mean, we are so much scared of rejection. We cannot take rejection, and it is mostly common with man, that people with masculine energy do not agree with taking rejections. They do not love rejections. They cannot handle rejections, and when they are getting a rejection, the guilt starts coming and they do not want to face it. तो वो rejection को face ना करने के लिए भी uh, हम ज्यादातर give in कर देते हैं situations में. ठीक है. And then comes emotional responsibility that is learned earlier in stage. Okay. Now when we say it's learned earlier in stage, what do you think it can be? Can we enlighten a little bit on this? I think when we are saying that, emotional responsibility, it's like saying that you have to obey people or agree with what they are saying so that they are not mad at you. This is what I'm able to figure it out. Right. Yes, you are right. So a lot of times when we say that you have to say you have to obey to people and you have to say yes only. There is no in the picture anytime, right? So एक तरीके से emotional responsibility develop हो जाती है for everyone and anyone, and it comes very earlier in stage.
ठीक है। अब जब वो अर्लियर इन स्टेज आ जाता है तो आपका वो पैटर्न डेवलप हो जाता है, आप उसको डिस्कनेक्ट नहीं कर पाते। सो वी चूज, व्हेन वी चूज आवरसेल्व्स द गिल्ट स्टार्ट्स कमिंग। ओके। अब वी हैव टू अंडरस्टैंड कि we are not responsible for everyone's happiness over here, राइट। सो ये बहुत जरूरी है समझना कि सबको खुश करके कोई नहीं चल सकता, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल, राइट। अगर हम सबको खुश करने के लिए करने लगे तो हम खुद को अनहैप्पी फील कराएंगे, वी विल बी डिससेटिस्फाइड इन सम और द अदर एस्पेक्ट, राइट। तो सबको खुश करके we don't need to feel that everyone should be happy and we don't need to go ahead with that things only, ठीक है। now another message that I want to talk about is we always मतलब एक तो हो गया वो शादी वाला कॉन्सेप्ट, राइट। एक हो गया वो फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट, that people wants to go to marriages, people wants to attend the फंक्शन, क्योंकि उनको लगता है कि फिर हमारे यहाँ पे कौन आएगा, राइट। तो उसी तरीके से हमारे मेंटालिटी में एक और चीज रही है कि लोग क्या कहेंगे, राइट। अब जब लोग लोग क्या कहेंगे सोचते हैं तो हम हमेशा प्रायोरिटी कर लेते हैं किसी और को, ठीक है। अब जब ये होता है also with me, Aparajita, I want to share this one incident that happens with me all the time and it irritates me every time because I am thin. People always wants me to adjust in seats, राइट। कि नहीं नहीं आप आ जाओ, आप गोदी पे बैठ जाओगे तो भी चल जाएगा, अरे आपको तो इतनी ही सीट की जरूरत है, राइट। सो थोड़ा एडजस्ट कर लो, over there also it comes, ठीक है। now a lot of times people also say अरे you are so mature, you have to understand or you will always understand. These are some common messages or common expectations that we all carry. Now why do I say we all carry? Because definitely we also are human beings, and somewhere even we, when we are psychologists, somewhere we also make mistakes in day to day lives, राइट। तो जरूरी नहीं है कि मैं अपने आप को परफेक्ट बताऊं या फिर जरूरी नहीं है कि यहाँ पे मैं परफेक्शन पे ही फोकस करूं, नहीं, वी ऑल डू दिस मिस्टेक्स एंड वी ऑल सफर ऑल्सो विद दिस मिस्टेक्स, ठीक है। तो this messages stay in our mind and these messages always shape our lifestyle, ठीक है। now this was the common mistakes, the common messages that I spoke about, that we do not need to upset people, adjust a little bit more, ठीक है, bit be understanding, think about others first, ठीक है, ये हमेशा सिखा है। You are saying something, Aparajita? No, no, I was agreeing to you that, we have always been told that think about other first. उनके बारे में सोचो. So yeah, this is something like when I am hearing it from you, then I'm like, oh yes, this is what my thought patterns has always been. This is something which is very naturally ऐसा engrave है हमारे थॉट सिस्टम के अंदर कि दिस डज नॉट फील रॉन्ग. इट फील्स हाँ ऐसे ही होता है, बट या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मोर हमारे देन यहाँ तो लर्निंग से ऐसे ही ज्यादा हमें होता है। यहाँ पे, या हमें अभी लर्निंग से ज्यादा बहुत अनलर्निंग की जरूरत है. सो या Yes, definitely right. And I don't want to focus on genders here, but don't you think so कि लड़कियों को ज्यादातर यही सिखाया जाता है कि यू आर अ वुमेन, आपको तो ये करना ही है, आपको तो अपने पति का सुनना ही है, या यू हैव टू गो इन द किचन एंड किचन को ही संभालना है, किचन तो आपके ही नाम पे है। डोंट यू थिंक सो these are also some things that are so ingrained into yourself, and then it is something that you carry with you and यही हमारा लाइफ है समझ के हम वही चलते हैं, राइट। या आई लाइक थिंक यस, यू आर राइट.
So also at when I get some clients, so when I get clients which are female, sorry, which Mm-hmm. are females, and then they are also of maybe in mid old age, तो उन वो लोग आते हैं. There is one client who always I'm teaching her to set a boundary with her husband. तो क्या होता है कि हम हमेशा बोलते हैं कि आपको सेट करना पड़ेगा बाउंड्री. तो वो हमेशा ऐसे बोलती कि अरे कैसे कर सकते हैं हम, हमारे लिए तो पति है, उनके लिए हमें ऐसे Mm-hmm. करना, मतलब ये तो कर ही नहीं सकते ना. बेसिक बाउंड्री विच इज वेरी मच नीडेड. क्या होता है पता है उनके साथ, ये है कि शी इज टोल्ड एट नाइट एट 1 o'clock कि उनके हस्बैंड को हमेशा आफ्टर 12 कुछ ना कुछ खाने का मन करता है. एंड बी इट एनीथिंग, if there is anything like she want, मतलब कुछ नाश्ता रहेगा तो नाश्ता निकाल के दे दो, फ्रूट्स है तो फ्रूट्स काट करके दे दो, अगर कुछ नहीं है तो कुछ बना के दे दो. Now can you imagine, this woman must be carrying so much of not mental peace, मतलब so much of Yeah, drained energy. Yeah. very true. And when we see these kind of things happening, और आप जब सिखाते हो कि आपको बाउंड्री सेट करना जरूरी है, तो आप सोचो, एक तो उन्होंने 20 साल से ये किया है, और जब 20 साल से ये Mm-hmm. करते हैं तो कितना डिफॉल्ट सिस्टम बन चुका है कि उनको चेंज करना इज Mm-hmm. सो डिफिकल्ट, राइट. एंड अगर वो चेंज करने की कोशिश भी करते होंगे तो कितना गिल्ट आता होगा उनके दिमाग में, Mm. राइट. सो दिस इज व्हाट अ फीमेल आल्सो goes through, and at the same time males also go through a lot of things that can generate guiltiness, definitely. uh, Can we discuss that too? Do you have any examples? I have, but I wanted to speak about it too. Yeah, I think with male, it's mostly, again, like a female are supposed to do the household work and all those things. With men, it's like they cannot say no if somebody is calling them and asking for help in night, we need help, like, taking somebody to hospital or to dropping somebody at station. They cannot say no to it because, yeah, they are men and they have to do this. And there are times when they want to rest and they want to be vulnerable, but they cannot do it because, this is not लोग क्या normal. So कहेंगे? I think, Yeah, huh. right. So I And think with them also there is this problem. yes. So with men, a lot of times, उनको उनके लिए पर्सनल टाइम है ही नहीं. उनके लिए पर्सनल टाइम जैसा कॉन्सेप्ट ही नहीं बनाया है in our Indian system or anywhere. Maybe I don't know about the foreign system. I know more about the Indian system, so I will speak about it. Mhm. So yeah, हमारे इंडियंस मेल्स के लिए कोई पर्सनल टाइम जैसा कुछ बनाया नहीं. अगर आपको रात को आ रहा है 9 बजे भी आपको कॉल आ रहा है फ्रॉम योर वर्क प्लेस, यू हैव टू पिक अप. लाइक इट इज सो इनग्रेन्ड इन देमसेल्फ कि नहीं, कॉल आया है उठाना तो पड़ेगा, राइट. जस्ट लाइक यू सेड कि अगर कुछ मेजर हो जाता है तो आदमियों से इतना एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको तो जाना ही पड़ेगा, आपको तो करना ही पड़ेगा, मतलब दैट टू इज सो मच एक्सपेक्टेड विद देम, राइट. ओवर हियर एक्सपेक्टेशंस आर आल्सो वेरी कॉमन मैसेजेस. अगर वो लोग नहीं करेंगे, अगेन the same thing, if they don't want to do it, then again they will be like कि अरे नहीं किया तो क्या हो जाएगा, अगर मैंने फोन नहीं उठाया तो क्या होगा, अगर मैंने ये नहीं किया तो. So this happens with everyone, it just happens in their own ways, right. So these are the common messages. Yeah. Why some people feel more guilty. ठीक है. Can we think of this and lighten a little? Yes. So most of the times these are very common things. These are very common things. ठीक है.
जिसमें लोगों को गिल्टी फील मतलब गिल्टी कम्स इन हैंड, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब आप इंटेंस बाउंड्री रखने जाते हो बट स्टिल इट्स नॉट वर्किंग, व्हाई इट इज हैपनिंग? बिकॉज people are high on very much high on empathetic, राइट? क्योंकि आप इतने इतने दयालु, इतने मतलब यू फील एवरीवन्स इमोशंस, यू फील एवरीथिंग दैट अदर पर्सन इज गोइंग थ्रू, सो यू ऑलवेज थिंक कि अरे वो इंसान को मेरी जरूरत है, वो इंसान क्या फील करता होगा, ओनली आई नो। So you are so high on empathy that you don't want to put your self on first. ठीक है? Now, second thing is eldest child. Elder child is always the one who feels guilty of doing things for herself or himself. ठीक है। अब जब एल्डेस्ट चाइल्ड होता है, अगर वो अपने बहन या भाई के ऊपर खुद को रखता है या खुद को रखती है, they always think, am I doing this right? I shouldn't do this. This is something that is prioritizing only me. क्यों? क्योंकि उनको हमेशा बचपन से यही सिखाया है कि you are only the कर्ता धर्ता of your family, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम आपके भाई और आपका बहन जो भी है आपसे छोटा है, तो आपको उनको साथ लेके ही चलना है, ठीक है। नाउ आई वुड लाइक टू स्पीक ऑफ अ क्लाइंट ओवर हियर हु इज आल्सो एन एल्डर चाइल्ड, and whenever so she is the one who has carried responsibilities all the time. अब जब responsibilities हमेशा उन्होंने कैरी की है, तो पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस और पेरेंट्स का भी एक पैटर्न बन गया है कि हाँ, शी इज ओनली द वन हु विल डू थिंग्स फॉर मी, और शी इज ओनली द वन हु विल डू थिंग्स फॉर अस। तो कहीं पे भी जाना होता है, शी ऑलवेज इज द वन हु इज आस्क्ड फॉर कि will you do this for me, will you come with me? And whenever मतलब she has found this new pattern कि this is very much tiring, I want to say no but then I can't because I know that मेरे parents के लिए I am only the one who is going to take them somewhere or who is going to do things for him or her, तो वो नहीं कर पाती, ठीक है। तो दिस इज द मेन रीजन कि आप अपने आप को बहुत ही कम प्रायोरिटाइज करते हो, और फिर आप एल्डर चाइल्ड हो तो आप पे एक्सपेक्टेशंस रहती है ना। एट द सेम टाइम जो केयर टेकर्स होते हैं, दे ऑल्सो फील गिल्टी ऑफ कीपिंग देमसेल्स टॉप ऑन टॉप, क्योंकि जब वो लोग अपने लिए कुछ सोचते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि there is a time caretakers में कौन आता है? Can you give me some example, Aparijita, if you have some? Yeah, I think caretakers, we can say like mostly our parents, like father or our mother, or when we are talking about, the elder siblings, they are Yeah, there. yeah, they are also a sort of Huh. caretakers, right? Right. I would also think of somewhere nannies also, someone who have Hmm. been, hired for taking care of children. अब Hmm. जब वो लोग हायर किए गए हैं, तो दे आर एक्सपेक्टेड to take care of them all the time, and if they are tired they cannot say no because they are being paid and they have to do it. Hmm. if they have something that needs prioritized, तो वो पहले यही सोचते हैं कि अरे उनका बच्चा है, I have to take care of that kid, I cannot say no to them, या इवन फॉर सेक ऑफ मतलब हमारी जो बाई आती है घर पे काम करने के लिए, राइट? द सर्वेंट्स और द सर्विस पीपल, दोज हु कम टू अस, दे आल्सो जब वो बोलते हैं कि अरे दीदी आज मैं नहीं आ पाऊंगी बिकॉज मेरी बेटी का क्लासेस है, मेरी बेटी के आज सारी डे है, तो हम सबसे पहले क्या सोचते हैं कि अच्छा नहीं आ रही है, आई विल कट योर अमाउंट, राइट? अब जब वो ना बोलने जाते हैं, दे दैट इज द फर्स्ट थिंग जो हम सोचते हैं कि अरे अ, मुझे ना बोलना चाहिए, मुझे नहीं बोलना चाहिए, यही सामने वाले इंसान को लगता है, राइट?
नाउ अनदर थिंग ओवर हियर इज कि इमोशनली जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही अवेयर होते हैं, those are also the people who carry guilt a lot of times. Was I audible all the time? Okay. Yeah, so जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं अबाउट एवरीवन्स फीलिंग्स, अबाउट एवरीवन्स थिंग्स एंड एवरीथिंग. तो इमोशनली अवेयर पीपल ऑल्सो go through a lot of guiltiness. Again, peacemakers. There are always, I mean, peacemakers में हम मिडिल चाइल्ड को पकड़ सकते हैं, क्योंकि मिडिल चाइल्ड को ये सिखा गया है कि अरे आपको बड़ी बहन का सुनना है, अरे ये तो छोटा है, छोड़ो, यू डोंट हैव टू थिंक अ लॉट अबाउट इट, जाने दो. So the middle child is always considered to be a peacemaker. They have this sort of mind कि वाई डोंट आई टॉक टू दिस पर्सन, अगर उनके बीच में झगड़ा है तो मैं इनसे भी बात कर लेती हूँ, इनको भी समझा देती हूँ, एंड देन दे विल कम टुगेदर. So these are the people who always feel guilty for other people's fights or other people's mistakes or anything, right? And at the same time, people pleasers. Now, a lot of people don't know what is people pleasing, है ना? क्योंकि people don't know that बहुत पीपल प्लीजिंग जैसे भी कोई चीज है, मतलब व्हेन वी आई विल जस्ट पुट अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा नॉलेज ओवर हियर कि पीपल प्लीजिंग इज व्हाट बट नथिंग बट जस्ट always trying to keep others happy, even if it is causing stress, even if it is tiring, or even if it is giving you emotional pain. We always try to say yes to other person, and that is only people pleasing. You say yes when you want to say no. You want to avoid conflicts at all the cost. ठीक है? You want to put others first all the time, and you forget yourself. ठीक है? That is what people pleasing is. Now, when people pleasers are there, they always feel guilty of saying yes all the time. ठीक है? And then when we, these are mainly, the major reasons of carrying guilt. ठीक है? जब भी ये सारे लोग होते हैं, इनमें ज्यादातर इन सारे लोग में ज्यादातर गिल्ट रहता ही है, क्योंकि वो हमेशा दूसरों को प्रायोरिटाइज करते हैं, और खुद को जब प्रायोरिटी देते हैं तो देर इज मेजर अमाउंट ऑफ गिल्ट within themselves. ठीक है? Now when we say there is major amount of guilt, so we have to understand that guilt is coming from responsibility. You see everywhere over here, these this has a common message that you are responsible for others' happiness, or you are responsible for others in general. ठीक है? सो रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ पे भी आएगी, और जहाँ पे भी हमने बहुत ज्यादा हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी रख दी, तो देर इज फॉर श्योर गिल्ट कमिंग. ओके? And at the same time, when we feel that we are being selfish, again, guilt comes with it. But you have to understand that being selfish is not something wrong, and you should not even prioritize all the time to others. Yes. So nervous system perspective क्या कहता है? जब मैंने कहा कि हमारा ब्रेन एक तरीके से पैटर्न क्रिएट कर देता है, राइट? तो जब हम पैटर्न क्रिएट करता है तो नर्वस सिस्टम इज एक्टिव ऑल द टाइम. ठीक है? it does not get rested all the time or any time. It is always working, maybe to relax you, maybe to keep you alert, maybe to give messages to your brain, or to do everything in you. Okay? सो जब हम खुद को प्रायोरिटाइज करते हैं, जब हम किसी को ना बोलते हैं,
कोई क्लोज्ड वन होता है जिनको हम ना बोलते हैं, कुछ भी, तो हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो एक्टिव हो जाता है और वो एंजाइटी क्रिएट कर देता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि एक तरीके से पैटर्न जो कैरी करते आए हैं वो ब्रेक होने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब ब्रेक होने की कोशिश कर रहे हैं तो नर्वस सिस्टम थोड़ा सा अलर्ट हो जाता है, क्योंकि ये पैटर्न इतने टाइम से चल रहा है, राइट? तो इट एक्टिवेट्स एंजाइटी। योर बॉडी reads boundary as emotional risk. Now, what do you think that it is about? Yes, so body reads boundary as emotional risk means कि जब हम खुद को प्रायोरिटाइज करते हैं या जब हम खुद को लेट्स से कहीं पे हम ना बोल देते हैं, तो बॉडी तुरंत अलर्ट मोड पे चली जाती है और तुरंत एक तरीके से सोचने लगता है कि कुछ तो बुरा होने वाला है। ठीक है। हम रिस्क एनकाउंटर्स करने की कोशिश कर देते हैं, हमारा ब्रेन कहीं ना कहीं सोचने लगता है कि इज देयर एनी रिस्क, इज देयर देयर विल बी सम रिस्क इफ समथिंग, इफ आई कीप माई सेल्फ ऑन प्रायोरिटी, इफ देयर इज समथिंग, इफ आई से नो, तो कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है, इस वॉट योर बॉडी स्टार्ट्स रीडिंग। ठीक है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि पहले तो पैटर्न ब्रेक हो रहा है, इसलिए जब पैटर्न ब्रेक हो रहा है तो नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, एक्टिवेट होगा तो एंजाइटी क्रिएट होगी, एंजाइटी क्रिएट होगी तो वी विल स्टार्ट डाउटिंग, वी विल स्टार्ट गोइंग इन गिल्ट। ठीक है। अनदर थिंग, जब हम प्रायोरिटाइज करते हैं, जब हम कुछ ऐसा करते हैं जो किसी और को ना बोलने जैसा चीज, तो हमारा बॉडी एक तरीके से रिस्क को रिस्क देखने लगता है। अब जब रिस्क देखने लगता है तो यही सोचने में लगते हैं हम कि समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, या कुछ तो बुरा होने वाला है, कुछ हो तो नहीं जाएगा, ये हम सोचना चालू करते हैं। एंड एट द सेम टाइम हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि गिल्ट इज जस्ट बॉडीज रिस्पॉन्स एंड इट्स नॉट अ मिस्टेक। ठीक है। जब हम ये सोचते हैं कि मैंने किसी और को प्रायोरिटाइज नहीं किया, तो हम यही सोचते हैं कि मुझे तो यही सिखाया गया है बचपन से कि सामने वाले इंसान को रिस्पेक्ट करो, सामने वाले इंसान को नो नहीं बोलना है, सामने वाले इंसान को कभी भी नीचे नहीं गिराना है। तो ये कहीं ना कहीं मेरे मॉरल फेलियर तो नहीं हो रहा, राइट? सो इट्स अ मिस्टेक, दैट इज व्हाट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड, but it is not your mistake, or it is not a mistake. That is something that we need to understand, right? Yes. Yeah. This is something that is very difficult for everyone and anyone, right? अगर हम देखने जाए तो अभी की जनरेशन तो कहीं ना कहीं सीख रही है बाउंड्री सेट करने, बट पुरानी जनरेशन जो थी उनको तो कभी उन्होंने सीखा ही नहीं है। अब जब उन्होंने सीखा नहीं है तो उन्होंने हमेशा सबको प्रायोरिटी दी है। और मोस्टली जब सब लोग ये सोचते हैं कि मैंने तो सबको प्रायोरिटी दी है, लेकिन मेरी बेटी तो देखो खुद के लिए ही सोचती है, खुद के लिए ही चलती है, राइट? मतलब किसी को कुछ भी प्रायोरिटी नहीं दे रही है। इवन फॉर मैन ओवर, लड़का भी यही अगर खुद को प्रायोरिटी देता है तो अरे ये देखो, चला अपने आप को प्रायोरिटी देने, हमने तो ये किया, हमारे जमाने में हमने तो वो किया, राइट? इवन तारक मेहता का चश्मा में इफ यू सी, तो भिड़े इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट इमोशनल हिस्ट्री और ओल्डर टाइम्स के सीन्स, राइट? क्यों? क्योंकि इट इज सो डिफिकल्ट दैट एक तो पुरानी हैबिट्स को छोड़ना, पुरानी चीजों को भूलना और नई चीजों को अपनाना, राइट? इमोशनल हिस्ट्री कितनी ज्यादा होती है लोगों के बीच में कि मतलब नो वन वांट्स टू थिंक अबाउट अभी का, एंड दे आर कैरिंग पीछे पिछले टाइम का इतना कि इट इज वेरी डिफिकल्ट विथ योर फैमिली, या मतलब ओल्ड रूल्स। मतलब अगर आप दादाजी को बोलो दादाजी नहीं मुझे नहीं करना, तो दादाजी विल बी सो
ट्रॉमेटाइज्ड एट दैट टाइम कि ओ माय गॉड, ये कैसे इसने मुझे ना बोला, मतलब इसमें तो संस्कार ही नहीं है, हाउ डेयर शी सेज मी नो और एनीथिंग लाइक दैट, राइट। वो मैं अभी के लिए बोल रही हूँ, मतलब पुराने टाइम के लिए। अब these are something that happens with everyone or mostly with everyone, right? Fear of being misunderstood is also something कि जो फैमिली में चलता आता है. Is there any background noise in between? Okay. So fear of being misunderstood is also something जो फैमिली में चलता आता है कि कुछ और बोलना चाहते हैं लेकिन लोग इतने, मे बी दे आर हाई ऑन देमसेल्व्स और मे बी दे हैव सो मच पैटर्न ऑफ लिसनिंग नॉट टू अदर्स बट ओनली टू देयर ओन थॉट्स। तो लोग इतना इजीली मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं सबको कि हमारे अंदर, हमारे फैमिलीज के अंदर एक तरीके से ये बहुत जनरेट हो जाता है कि व्हाट इफ दे मिसअंडरस्टैंड्स मी, हमेशा से मिसअंडरस्टैंड किया है तो इस बार भी मिसअंडरस्टैंड कर लिया तो, राइट। फिर एक होता है लूजिंग क्लोज वंस। आपके अंदर इतना मतलब दबाया गया है कि अगर मैंने अपने आप को प्रायोरिटाइज किया तो आप अपने जो क्लोज वन है उनको खो दोगे। Okay, maybe it comes with your parents, it comes with your maybe dada dadi or chacha chachi or anyone, everyone in your family. अगर वो बोलते हैं कि नहीं मुझे ये नहीं करना है तो सबसे पहले the thought comes with कि oh my god what this person will say now, if am I going to lose this person, am I going to uh, is this person going to say something that is going to be very much overwhelming. Also it comes with abandonment issues, जिनको बहुत abandonment issues होते हैं, जिनको ये होता है कि कोई मुझे छोड़ देगा या फिर कोई मुझे मेरे से दूर हो जाएगा. It is also difficult for them, right? So the closer the relationship, the stronger the guilt will be. Okay. Why? Because close relationships are always those relationships which means a lot to us. And when it means a lot to us, we want to prioritize them all the time. And when we prioritize them, we always keep ourselves second or third or fourth, and then we lose ourselves. And then when we are trying to keep ourselves somewhere in on top, तो फिर वो guilt आना चालू हो जाता है, right? So saying no to your parents or relatives feels very heavy कि ना कैसे बोलूं, right? Yeah. Now, boundaries versus people pleasing. Just say I told, people pleasing means keeping, always trying to keep others first and not yourself. Always trying to keep others happy when even when it is stressing you a lot or it's emotionally giving you pain and everything. So it is only nothing but people want, I mean people pleasing वाले हमेशा उनको अवॉइड करना है कॉन्फ्लिक्ट्स को, ठीक है। बट एट द सेम टाइम बाउंड्रीज क्या कहती है कि अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट द solution, protecting well-being is something that is needed at the moment, ठीक है। जब हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं तो हम एट दैट मोमेंट ये नहीं सोचते कि मुझे क्या जरूरत है या व्हाट इज नीडेड इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। हम हमेशा यही सोचते कि झगड़ा और थोड़ा अवॉइड करें या फिर किसी चीज का अनकंफर्टनेस जो डेवलप हो रहा है वो अवॉइड करें। But your protection to yourself is protecting you, protecting your well-being is something that is very much important and needs to be done. So try, for people who are seeing us, if you feel that you are the person who wants to avoid conflicts,
try protecting yourself first, and then we'll focus on avoiding conflicts, maybe secondary, maybe third, fourth. We'll keep that in the second or third position. Yeah. Second is seeking approval. सीकिंग अप्रूवल यहाँ पे उसका मतलब ये नहीं है कि आपने कोई प्रपोजल डाला कहीं पे एंड देन यू वांट टू गेट अप्रूवल विथ इट, नो। यहाँ पे सीकिंग अप्रूवल मीन्स कि आप जब भी जो बिहेव करते हो लोगों के साथ, यू आर बिहेविंग इन अ सर्टेन वे दैट गेट्स अप्रूव्ड बाय पीपल. It's not verbally, it's not physically, it's mentally. You know that you will behave in a certain way that will be approved by people. Okay, so try to not do that, because यहाँ पे again, when you are doing that, you are somewhere not behaving or not understanding your own self, or you are not understanding what you need at that moment, and you are giving priority to others people, and again we are tiring our own self, right? So create clarity, which is also a boundary which you need. Create clarity in your own self. Ki what do you need when you are seeking approval? And if you know that this is something that I need, try inculcating in your own way for your own self. And try not to seek approval from other people, which will only and only drain you. Okay? Now, also, people pleasing costs you emotional energy. It costs you emotional energy. क्योंकि आप देखो, अगर आप सोचते हो कि मतलब आप सोच के ही बिहेव करते हो कि अगर मैंने लेट्स से गोइंग टू फंक्शंस, ठीक है, कि मुझे फंक्शन में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं नहीं गया तो माय कजिन्स विल से ओ माय गॉड दिस वुमन इज सो फुल ऑफ हरसेल्फ, और वो आई नहीं क्योंकि उसको तो अपनी ही पड़ी है, किसी और की पड़ी ही नहीं है. मे बी फैमिली विल से कि ओ अच्छा इसमें तो एटीट्यूड आ गया है, अच्छा ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है. सो हम क्या करते हैं, हम ये सोच सोच के हमारी ही इमोशनल एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं. एंड एट द सेम टाइम जो हमें पता है कि मेरे में एनर्जी नहीं है, फिर भी हम चले जाते हैं. So it is costing your physical, emotional, mental energy all the time. So if you feel uncomfortable at that moment, it's all right. Okay? Because guilt will make you feel uncomfortable initially. Okay? But trust me, boundaries will make you feel comfortable later on when you start keeping them. Okay? So if you feel guilty, it's all right. It's just for the moment and it's just for some time, but it will be very good and it will be helping you for longer term. Oh, very, very much helpful. Matlab, it's very good. It helps me a lot when you keep boundaries. So it helps a lot. Conclusion, feeling guilty does not mean you are wrong. It means you are just unlearning survival patterns. Just like Aparijita said a while ago, ki we are just unlearning certain things that are being told to us, that are being taught to us. And जब हम वो unlearn करते हैं तो थोड़ा सा guilty feel होता है, थोड़ा सा uncomfort feel होता है. You will feel that you are doing something wrong, but trust me, you are not, and you are not wrong. You are just unlearning patterns. ठीक है? Yes. How to hold guilt without breaking boundaries. ठीक है? अब जब गिल्ट होता है तो yes, we are feeling uncomfortable. Yes, we are feeling to change our decisions. We are feeling everything in the world, which is a lot sometimes, right? So, first of all, it's all right. It happens to everyone and it is happening with you, then it's okay.
ओके, मेक योर सेल्फ बिलीव दैट इट्स ऑल राइट, ठीक है, अलाउ द गिल्ट, tell yourself that it's all right, okay, you are in safe space, it's not a danger, and allow that guilt to come and let it go as well. If it is not going, that's all right, but just don't push and don't fight with it, ठीक है, do not over explain. हम क्या करते हैं, हम हमेशा लोगों को ओवर एक्सप्लेन करने में लग जाते हैं कि हाँ मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मुझे ये करना है, क्योंकि मुझे वो करना है, क्योंकि मैं नहीं आना चाहता हूँ, क्योंकि ये वो, क्योंकि है ना। तो हम हमेशा ओवर एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश करते हैं, सो डू नॉट ओवर एक्सप्लेन। एट द सेम टाइम हम सेल्फ ब्लेम में भी लग जाते हैं ना, क्योंकि क्योंकि हमें सिखाया, यस, ये हम समझ गए कि क्योंकि हमें सिखाया गया है तो हम हमें खुद को प्रायोरिटाइज नहीं करते, तो वी स्टार्ट सेल्फ अटैकिंग टू आवरसेल्फ कि तू नहीं कर सकता ये, तू ये नहीं करनी चाहिए, तुझसे कैसे हो रहा है ये, यू शुड नॉट डू दिस, यू आर अ बैड पर्सन, यू आर दिस, यू आर दैट, सो you're self blaming ourselves. So do not do that, okay, and stay consistent in setting boundaries. When you set boundaries in your corporate, in your work culture, all the time कि मेरा ये time है, I will be leaving at this time, if you want some work to be done at certain time, give me a little bit earlier, या फिर give me on a new day in the beginning, ठीक है, so set your time, you are coming at this time, you will leave at this time, and stay consistent on that. ओके, अगर आप फोन नहीं उठाना चाहते हो तो फोन नहीं उठाना चाहते हो, इफ देर इज अ वेरी बिग इमरजेंसी एंड यू नो दैट इट नीड्स सर्टेन अटेंशन, देन इट्स अंडरस्टैंडेबल। पर अगर जरूरत नहीं है और वो एक पैटर्न बन गया है सामने वाले इंसान का कि ये टाइम पे कॉल करेंगे ही करेंगे, मेक श्योर कि आप उस चीज में कंसिस्टेंट रहो कि आप फोन नहीं उठा रहे हो, या फिर सामने वाले इंसान को आप बता दो कि दिस इज योर पर्सनल टाइम एंड दिस शुड बी मेंटेन्ड, ओके। आपको इसमें मेंटेन करने की और आपको इसमें कंसिस्टेंट रहने की बहुत जरूरत है। सो अलाउ द गिल्ट, डू नॉट ओवर एक्सप्लेन, डू नॉट सेल्फ अटैक, एंड स्टे कंसिस्टेंट। Yes, these are some statements. Just a minute. So, yeah, these are some statements which will help you basically, which will help you to be calmer at that moment of being anxious, feeling guilty, self-blaming. Okay, these statements will help you. You can take screenshots, you can write it down, whatever feels great, you can do. So ये statements help करेंगे। जब भी हम uncomfort feel कर रहे हैं तो start labeling. You can definitely tell yourself कि it's okay, I am not comfortable with this, ठीक है। इफ यू फील कि सामने वाला इंसान बहुत काम दे रहा है और काम दे रहा है लेकिन आपको नहीं करना है, तो आप उस समय पे ये स्टेटमेंट यूज कर सकते हो दैट आई कांट डू दिस राइट नाउ, ओके। आपने ये नहीं बोला कि आई कांट डू दिस। अगर आप ये बोल देते हो कि आई कांट डू दिस, द अदर पर्सन माइट गेट ऑफेंडेड एंड माइट टेक इट इन अ रॉन्ग वे, जो शायद आपके लिए अच्छा ना हो, या शायद अच्छा हो, या इसके बारे में नहीं सोचना है। बट वेन यू से आई कांट डू दिस राइट नाउ, द अदर पर्सन माइट थिंक कि अच्छा अभी नहीं कर सकते, मे बी लेटर ऑन कर लेंगे, लेटर ऑन से भी लेटर ऑन, वट एवर, ओके। Now, when someone is giving work, for example, एग्जाम्पल में, हाँ, पर मतलब ये बहुत एक्सट्रीम एग्जांपल दे दूंगी अगर मैंने ये दिया तो, कि woman is understood that she has to work in kitchen, she has to give food to his husband, to her husband, and do things for everything for your husband, ठीक है। तो एट सच टाइम्स एक ब्रेन में, लड़कों के भी ब्रेन में ये पैटर्न हो जाता है कि ये तो लड़कियों का ही काम है, राइट। तो ये भी हम बता सकते हैं उनको कि दिस इज समथिंग दैट आई एम नॉट कंफर्टेबल डूइंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड, लेट्स डू इट टुगेदर, और वी कैन, यू कैन डू इट ऑन योर ओन, या कुछ भी जिससे बाउंड्री सेट होना स्टार्ट हो।
ठीक है। अगेन, अगर आपको लगता है कि इट्स नॉट फॉर यू, दिस डजंट वर्क फॉर मी, इज ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन से। अगर आपको लगता है that people are taking a lot of energy from you, you can again say, I need some space. These are very short and calm and at the same time respectful statements that helps you all the time and will help you most of the times. Okay? Use such statements which will be respectful. You don't need to explain a lot, and it's it will help you to calm down as well. Yeah. This is a reflection exercise. रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज क्यों करना है? क्योंकि हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता है कि दिस इज समथिंग दैट इज ड्रेनिंग मी, और दिस इज समथिंग दैट इज टायरिंग मी, और ये मुझे मैं पेन मेरे लिए पेनफुल है या फिर समथिंग लाइक दैट. सो ऑलवेज whenever you are sitting and then you feel that someone has asked you to do things, ask yourself that will this drain me? If it is draining you, where do I feel drained? Is it your body parts? Is it your brain? Is it your mental energy? Is it your mind, your peace? Find out those things, okay? And for people, I want to tell you it is possible. I know that there will be certain population who thinks अरे ये थोड़ी ना possible है, आपको कैसे पता चलता है? But नहीं, trust me, ये possible है. To know that which part of your body or which part of your inner system is feeling drained needs to be found out. ठीक है? Which boundary do you need to avoid? Okay. Why do you need to avoid means what? What does your which boundary needs to be avoid mean? अब जब हम बाउंड्रीज सेट करते हैं तो सामने वाले इंसान के लिए कुछ ना कुछ अनकंफर्ट हमारे लिए रहता है, सामने वाले इंसान के लिए भी रहता है. कहीं ना कहीं हम वो बाउंड्रीज सेट करने के लिए कोशिश करते हैं, वो बाउंड्रीज सेट होती है नहीं होती है. कहीं ना कहीं हम ये भी देखते हैं कि ये करना जरूरी है या नहीं. नाउ यू नीड टू एनालाइज दोज थिंग्स एज वेल कि ये जरूरी है या नहीं. शुड आई बी अवॉइडिंग दिस बाउंड्री और नॉट? Okay. And when you are keeping a boundary, yeah, if you are setting a boundary, so what fear is coming? Is it fear of disappointing others? Is it fear of judgment? Is it fear of rejection? Or it is childhood conditioning? What? जो हमने पहले पढ़ा. Okay. So find out these things and then start creating more and new patterns in your brain. It will be difficult initially, but it will be done later on. Okay, yes, over here, discomfort is part of your growth. ऐसा कभी नहीं होगा जब भी हमें डिस्कम्फर्ट फील नहीं होगा. हमारे अगर हम कंफर्ट जोन में रहेंगे तो हमें कभी भी डिस्कम्फर्ट फील नहीं होगा. बट कमिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन विल ऑलवेज you will always feel discomfort, and that will only grow you. ठीक है? हेल्दी पीपल रिस्पेक्ट बाउंड्रीज. ठीक है? अगर आपके आसपास हेल्दी लोग हैं जो समझते हैं आपको, जो जिनको पता है कि ये बाउंड्री उनके लिए बेटर है, दे विल ऑलवेज रिस्पेक्ट यू. अगर कोई ऐसा है कि हाउ कैन यू डू दिस, हाउ कैन यू नॉट, हाउ कैन यू से दिस टू मी, हाउ कैन यू से नो टू मी, you have to understand this person is not understanding you. Could be we are saying could be here, we don't know yet, so could be not a healthy person to you. तो जो भी healthy person रहेगा will always respect your boundaries. ठीक है? And again, you are not always responsible for managing others emotions, or you are not responsible for other people's happiness. Thank you everyone. Yeah. Thank you, Priya ma'am. This was so wonderful. And while listening to you, I realize, कि
हम कितनी बार ये बाउंड्री को, इफ समबडी हैज बाउंड्री तो हम ऐसे बोल देते हैं कि वो बहुत स्ट्रिक्ट है, वो तो मना ही कर देंगे, या तो हमें लगता है कि हम भी वैसे ही बन जाएंगे, बट आई थिंक creating boundaries very important as part of your self care, because Yes, it does not only true, help you but also it help other person to know you better, to understand you better. Because if we do not create boundaries both personally and professionally, at the end we are going to be burnt out, and then we'll not be able to cater to our need or especially to other people's need. So it's true, very important to create boundary so that other person also do not take you for granted, and by the end of the day you also are not exhausted and burned out. So thank you for teaching us this, and thank you for telling us, the psychology behind it, and also giving us these little affirmations. They were so nice, and I've taken a screenshot, and we will be sharing with everybody who have joined in. So thank you for that, and thank you for being part of our therapy. And we are just happy to have you on our platform. And I wanted to know a little bit yes, about that also, like if you can share to our audience about your experience about art therapy and yes. how it has been So for you. your voice is cracking. Am I audible to you? Yeah. So, Yes, yes, yeah, you're audible. I would like to mention this. I was actually thinking of mentioning this in the chat that, I came to know about AHA therapy from LinkedIn. Dr. Ashutosh Srivastav reached out to me, and when I went through the platform, I felt so relieved and I felt so it's like such a good platform for all the psychologists because you have everything in the platform. You can write notes, you can generate diagnosis, you can generate sessions also, you can get idea how to manage uh, everything. At the same time, it is Yeah. easier for conducting assessments and calculating and everything because we know as psychologists it is so uh, like time consuming जब calculations आता है assessments में हाँ. तो या तो it is very expensive online या तो you have to do it hand scoring and everything. So it is very exhausting, but AHA therapy का जो platform है, it has made it very easier and very convenient for psychologists, and I'm glad I started using it. I want to use more, and I will try to use more. That is what I'm going to keep in my notes. Hmm. Yes, Thank you so much for your kind words. And yes, so the people who have joined and want to know more about AHA Therapy is a platform created by the professional for all the clinicians or the psychologist, mental health worker. We have created a platform to make your practice much more smoother, safer, and also efficient. So anybody who want to check it out, you can reach out to us on our Instagram, LinkedIn, or even in the YouTube comment, and we'll be sharing a link with you. And for today, thank you, Priya ma'am, for being part of this webinar. This was so helpful and also very heartwarming. And all the people who have decided to say no in their New Year resolution, stick with that because you're doing nothing wrong. Mm, It's, like ma'am said, that sometimes being selfish is all right. It tells you yes, that you are important, and it let other people also know that you are important. And yeah, boundaries are not punishment, these are self-care. So thank you for yeah. all these words. These are going to be with me for a very long time, and with all the people who have joined in. And we do these webinars every Sunday, so we will be back by next Sunday. So see you next Sunday. By the time, everybody, please take care of yourself and do reach out to us if you need any support. And thank you, ma'am, for being here. It's lovely to be part. It's lovely that Thank you are you part of too. our therapy. Thank you. Bye Thank you bye. Take too. care. Bye.